भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है। गुड मॉर्निंग टू ऑल व्यूअर्स। आज हम 4 बजे नहीं लेकिन आज सुबह 11 बजे मिल रहे हैं इस डॉक्टर्स डायलॉग सीरीज में। सो वेलकम टू माय सेशंस एंड सीरीज। माई सेल्फ डॉक्टर गायत्री पंडित राव, आई एम होम्योपैथिक फिजिशियन फ्रॉम पुणे। और ये संवाद श्रृंखला मैंने शुरू इसीलिए की कि यहाँ पे मैं अलग अलग गेस्ट स्पीकर्स को जो अलग अलग मेडिकल बैकग्राउंड्स के हैं, डॉक्टर्स, रिसर्चर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, इन सभी को मैं आमंत्रित करती हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ पे आके वो अपने व्यूज, एक्सपर्टीज हमारे साथ शेयर करें। अलॉन्ग विद दैट, अगर उनके कुछ कंसर्न्स है रिलेटेड टू हेल्थ, आई एम डूइंग दीज सेशंस ऑन बिहाफ एंड कोलैबोरेशन विथ यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये हाल ही में हमारी रजिस्टर्ड ट्रस्ट हुई है ऑफिशियली। यहाँ पे वेबसाइट दी गई है uho.org.in and I'm doing these sessions also on behalf of Awaken India movement, जो एक concerned citizens group है। तो इनकी भी वेबसाइट यहाँ पे दी है। You can always go to it and see the various work being done at grassroots level by these warriors. अगर किसी ने प्रीवियस सेशंस मिस किए हैं या लाइव सेशन नहीं देख पा रहे तो यू कैन ऑलवेज गो टू QY, UHO एज वेल एज अवेकन इंडिया मूवमेंट के यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल्स। आज हमारा 26th सेशन है और हमारे आज सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट स्पीकर है। सो लेट मी वेलकम टुडे डॉक्टर अभय शुक्ला। वेलकम सर। Let me introduce him first. Yes. He is Dr. Abhay is public health professional. He has done his graduation, post-graduation from All India Institute of Medical Sciences, Delhi. He has been working in the areas of public health and community health for past 35 years. He is senior consultant with Sathi organization from Pune, along with being a member of core group on health, that is National Human Rights Commission, NHRC. He has authored and co-authored various publications on health system in India, including co-authoring the very popular book Dissenting Diagnosis, which exposes malpractices in the private medical sector in India. He has led drafting of the Patients' Rights Charter developed by NHRC, which has been nationally adopted by Union Health Ministry. He is one of the national co-convenor of Jan Swasthya Abhiyan. वो यह संयोजक है, सह संयोजक है ये जन स्वास्थ्य अभियान के, and is one of the founders of the Alliance of Doctors for Ethical Healthcare as well, ADEH. His research focuses on corporatization of healthcare, regulation of private healthcare sector, and community-based accountability of health services. He has contributed to several community-based health responses to COVID epidemic also in Maharashtra, as well as facilitating large-scale audit of hospital bills of COVID patients to redress overcharging by private hospitals. Actively involved very much in campaigns for right to healthcare, accountability of public health services, patients' rights, social regulation of private healthcare, developing system for UHC, that is Universal Health Care. तो इसी के संबंध में आज का हमारा टॉपिक है which is health care for profit or people. तो इसे हम बोल सकते हैं कि स्वास्थ्य जो है, ये सेवा, ये लाभ जो है, ये मुनाफे के लिए है या लोगों के लिए, ऐसा हमने आज टॉपिक का डिस्कशन रखा है। एजेंडा तो ये है that placing right to health care. So welcome sir to the session. सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी थोड़ा पीछे जाके कि आपने ये जो बहुत पॉपुलर बुक रही है आपकी डिसेंटिंग डायग्नोसिस, जो पब्लिश की है पेंगुइन ग्रुप ने, तो सर ये तो बहुत आई थिंक 6 to 7 years बैक ये आपने बुक लिखी अलॉन्ग विथ डॉक्टर गदरे। तो तभी के सिचुएशन में और आज के सिचुएशन में आपको कुछ क्या बदलाव दिखाई देता है?
या ये बुक ज्यादा अभी जरूरी हो गई है? ये मेरा पहले आपसे सवाल है। हाँ, थैंक्स मीनाक्षी। हाँ, तो हमने जब ये किताब लिखी, डॉक्टर गद्रे मेरे कोलीग और मैंने मिल करके, उस समय ये कोविड के पहले का काल था और उस समय हमें कमर्शियलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर और उसका जो समाज के ऊपर प्रभाव है, जो हेल्थ सिस्टम्स के ऊपर प्रभाव है और जो डॉक्टरों के ऊपर खुद उसका प्रभाव है, इसको हमने उसमें डॉक्यूमेंट करने की कोशिश की। तो मैं ये कहूंगा कि जो ट्रेंड्स उस समय दिखाई पड़ रहे थे, वो अभी आज 2024 में उससे भी ज्यादा वो और एक्सेलरेट हुए हैं। उसमें से अनफॉर्चुनेटली जो जो नेगेटिव या कमर्शियलाइजेशन का जो पूरा एक इम्पैक्ट था, वो और भी बढ़ा है। और दो चीजें शायद ऐड हुई हैं। एक तो पूरा कोविड का एक्सपीरियंस। कोविड के एक्सपीरियंस ने हमें दिखाया कि अगर हेल्थ केयर इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, अगर उसमें प्रॉफिट का जो पूरा प्रॉफिटियरिंग कायम है, तो उससे लोगों को बहुत नुकसान होता है। और हमने कोविड के दौरान देखा कैसे प्राइवेट अस्पतालों में बहुत जगह लोगों को बहुत बड़ी मात्रा में प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बिल भरने पड़े। इरेशनल केयर भी बड़े स्तर पे हुई कोविड के दौरान और अनफॉर्चुनेटली इसका लोगों के ऊपर बहुत एक असर पड़ा। और दूसरा है कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स कितने इंपॉर्टेंट है, ये भी हमको कोविड ने दिखाया। उनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो कोविड के अनुभव से मुझे लगता है हम लोग के कुछ हमारे जो लेसन्स थे वो और रीइंफोर्स हुए हैं। और दूसरी चीज जो पिछले 6-7 साल में और बढ़ी है, वो कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर। हमने डिसेंटिंग डायग्नोसिस जब लिखा था, हमने उसका उल्लेख किया था। और कॉर्पोरेटाइजेशन मतलब सिर्फ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स नहीं, तो कॉर्पोरेट एक कल्चर पूरे हेल्थ सेक्टर में वो पिछले 6-7 सालों में और भी बढ़ा है। उसके परिणाम हुए हैं। तो मुझे लगता है कि वी हैव बीन इन सम वेज विंडिकेटेड बाय द कंसर्न्स दैट वी ट्राई टू रेज in our book, and in some ways the COVID experience and the growing corporatization of healthcare has further underlined the need for a social response and also a response from within the medical profession to check commercialization and to return healthcare to its social roots, जिसके बारे में हम आगे भी बात कर सकते हैं। Right. So I think sir second edition आनी चाहिए इस बुक की अभी। The situation is like that, I feel, from whatever you're telling. But sir, what could be the driving forces behind this? Like commercialization and corporatization जो आप बोल रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं that why a certain sector is going in such an advancement और इस तरीके से, and there is certain sector कि वो बिल्कुल ही पीछे हैं। तो व्हाट इज दिस डिफरेंस और गैप जो है, तो इसके पीछे क्या ड्राइविंग फोर्स आपको लगता है? देखिए, हमारे देश में 1950s, अगर हम आजादी के बाद का पीरियड देखें, 1950s से लेकर लगभग 1970s तक कमर्शियलाइजेशन काफी कम था हेल्थ सेक्टर में। जो बड़े अस्पताल होते थे वो या तो सरकारी अस्पताल होते थे या कुछ चैरिटेबल अस्पताल होते थे, और जो कि लगभग चैरिटेबल तरीके से चलते थे। इंडिविजुअल प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स थे ऑफ कोर्स, लेकिन उनका जो स्केल था ऑपरेशंस का वो बहुत छोटा था। उनका एक छोटा क्लिनिक रहता था, वो कुछ लोगों का थोड़ा बहुत इलाज करते थे और थोड़े बहुत पैसे लेते थे, लेकिन कमर्शियलाइजेशन उस प्रकार का नहीं था 1970s तक। हेल्थ केयर वाज सोशली एम्बेडेड। The important point to note is even the private practitioners were embedded in their communities. They had a relationship with the families whom they treated. और इसलिए अंधाधुंध प्रॉफिट कमाओ और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट निकालो, ये एटीट्यूड नहीं था हेल्थ केयर में 1970s तक। 1980s के बाद से हमारे मेडिकल कॉलेजेस में से बड़ी संख्या में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का जो प्रोडक्शन था वो बढ़ा। 70s तक एमबीबीएस होकर प्रैक्टिस करना ये एक्सेप्टेबल था। 80s के बाद से एमडी और एमएस के बिना आप डॉक्टर ही नहीं है, इस प्रकार हाँ, इस प्रकार का एक माहौल तैयार हुआ और बड़ी संख्या में हमारे मेडिकल कॉलेजेस ने पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स टर्न आउट करने शुरू किए, जो एक तरह से ठीक था, उनकी जरूरत थी। लेकिन वो अधिकतर पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स कहाँ गए? वो प्राइवेट सेक्टर पे गए। और अधिकतर डॉक्टर्स ने या तो अपने खुद के छोटे नर्सिंग होम्स खोले या छोटे प्राइवेट हॉस्पिटल खोले, और वो धीरे धीरे कमर्शियलाइजेशन वहां से शुरू हुआ। उन्होंने बैंक से लोन लेने शुरू किए।
उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, और जब इन्वेस्टमेंट हेल्थ केयर में आता है तो इन्वेस्टमेंट रिटर्न मांगता है, और रिटर्न जो है उसका अपना एक लॉजिक है। अगर आपका खुद का क्लिनिक है, आपने किसी से लोन नहीं लिया है, आपकी इनकम थोड़ी कम है, आपका काम चल रहा है, तो आप शांत रह सकते हैं। अगर आपको हर महीने ईएमआई भरना है तो आपके ऊपर एक प्रेशर है। हाँ, और वो ईएमआई भरने का जो प्रेशर था वो 80s से शुरू हुआ। 80s 90s में नर्सिंग होम्स, छोटे प्राइवेट हॉस्पिटल्स वर द मोर द नॉर्म। 2000s के बाद से वो और बढ़ा, और लार्ज मल्टी स्पेशलिटी प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स आल्सो एंटर्ड इनटू द पिक्चर। और आप ये देखिए कि यदि एक फैमिली प्रैक्टिशनर ये पूरी तरह से सोशली एम्बेडेड होता है या होती है, तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल ये पूरी तरह से सोशली डिसएम्बेडेड हो जाते हैं। आप वहां जाते हैं ब्रांड देख के कि ये फलाना कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है। वहां शायद जिस डॉक्टर को आपने पिछली बार देखा, वो नेक्स्ट टाइम वो डॉक्टर नहीं होगा, कोई और व्यक्ति होगा। सो देन एंड उनका पूरा का पूरा जो लॉजिक है, वो स्टेक होल्डर्स, जो मार्केट है, जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, उनके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना और खुद के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, ये उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो पूरा हेल्थ केयर का कैरेक्टर ही चेंज हो जाता है। तो ये ड्राइविंग फोर्सेस है। आज हमारे देश में जितने बड़े कॉर्पोरेट चेन्स हैं, अपोलो, मैक्स, नारायणा, फोर्टिस, इन सब में लार्ज स्केल इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स हैं। अभी बड़े मैं वही पूछने वाली थी कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस कितना है इसके पीछे, आपको क्या लगता है? आर वी इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्ट? और इसका मैं इसको वेस्टर्न नहीं बोलूंगा, इसको ग्लोबल बोलूंगा। ग्लोबल फाइनेंस। हाँ, तो ग्लोबल फाइनेंस जो है, जो या इंटरनेशनल फाइनेंस है, उसने हेल्थ केयर सेक्टर को, इंक्लूडिंग फार्मा सेक्टर को, एक बहुत लुक्रेटिव इन्वेस्टमेंट के रूप में टारगेट किया है। आज आप देखिए हमारे देश में, अगर आप डॉलर बिलियनियर्स की लिस्ट बनाइए, इंडिया हैज द थर्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ डॉलर बिलियनियर्स इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएस एंड चाइना। वी हैव मोर बिलियनियर्स देन ब्रिटेन और फ्रांस और जर्मनी और जापान और एनी अदर कंट्री एक्सेप्ट द टॉप टू। एंड इन डॉलर बिलियनियर्स में किस इंडस्ट्री से सबसे ज्यादा डॉलर बिलियनियर्स हैं? ये आपको पता है? द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इज फार्मा एंड हेल्थ केयर। मोर देन आईटी, मोर देन मैन्युफैक्चरिंग, मोर देन ऑटोमोबाइल्स, मोर देन केमिकल इंडस्ट्री, सबसे ज्यादा डॉलर बिलियनियर्स हमारे देश में फार्मा और हेल्थ केयर से। So health sector is almost dominated by pharma lobby, you can say. Yeah, the pharma lobby has a huge influence which is invisible to people outside the sector, but people who work in the sector, at least they have some sense, and that is where doctors themselves are often under pressure to prescribe maybe the medicine which is only marginally superior to a much cheaper and much more rational medicine, but is much more expensive. आपको पता होगा। सो ये पूरा जो फार्मा इंडस्ट्री का जो एक ग्रोथ हुआ है, और इसका जो एक ग्लोबल कैपिटल भी इसके अंदर इन्वेस्ट हुई है, या खुद डोमेस्टिक कैपिटल भी इसके अंदर बढ़ी है, इसकी वजह से इसका कमर्शियलाइजेशन पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इसका भी हुआ है। एंड ऑल दीज थिंग्स हैव अफेक्टेड बोथ डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स। राइट। सो आई थिंक इसीलिए आपने इनिशिएटिव आपके जैसे लोगों का है, शायद मुझे लगता है, टू फॉर्म NHRC, जो मुझे हाल ही में मालूम हुआ है कि इट इज द ओनली गवर्नमेंट एंटिटी। मैं सभी दर्शकों को भी बता दूं कि NHRC इज द ओनली गवर्नमेंट एंटिटी विथ मिशन ऑफ प्रमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स। एम आई राइट सर? या मैंने NHRC नहीं फाउंड किया है, गवर्नमेंट ने फाउंड किया है। या एक्टिवली इन्वॉल्व है। हाँ, I am only a member. I'm a member of the core committee on health and mental health. Okay. Yeah. But the main motive of starting this was to safeguard the right of people, right? People human rights. Yeah. All human rights. Exactly. तो अभी जैसे आपने एग्जांपल दिया कोविड का, जहाँ पे आप लोगों ने ऑडिट किया कुछ हॉस्पिटल बिल्स रिलेटेड वगैरह, तो मेरा आपसे ये सवाल है कि लुकिंग एट दिस ह्यूमन राइट्स बैकग्राउंड, मुझे एक आपसे बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछना है कि यहाँ पे मैंडेट्स अगर हम बात करें, कि जो कोविड पीरियड में हमने बहुत देखा कि ये आपको करना ही चाहिए, ये करना ही चाहिए, जो भी गाइडलाइंस, प्रोटोकॉल्स या इंजेक्शंस के मैंडेट्स थे, तो ये एज अ बॉडीली ऑटोनॉमी, एज अ ह्यूमन राइट,
आप एज अ पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट इस पे आप क्या राय रखेंगे? Do they fall under this category and should we fight for our rights? Do these rights come under this? हाँ, तो देखिए, पब्लिक हेल्थ में हमेशा एक टेंशन रहता है ऐसे परिस्थितियों में, खासतौर से एपिडेमिक्स की सिचुएशन में. एंड देयर इज ऑलवेज अ टेंशन और देयर इज अ काइंड ऑफ अ नीड टू बैलेंस between what are collective rights and what are individual rights, and neither of them can be totally ignored. So sometimes what happens is ki governments, including our own government, they very much tend to emphasize the collective whatever measures, and tend to push certain kinds of things like making vaccination compulsory, or making certain other kinds of making testing compulsory in certain ways, and which tends to obviously infringe upon the individual's rights. And there has to be a balance between the two. So the point is ki if I do not undergo testing and therefore I damage my own health, to some extent I have that autonomy. But if I do not undergo testing and I enter into a public space and there I infect 20 other people or 100 other people, then there's a bit of a problem, because other people's health is also at risk because of me. So this has to be carefully balanced. I think during COVID, the balance tilted more in the direction of mandates, and individual health rights was often infringed. And especially the most vulnerable, the most voiceless, the poor, the migrants, they were the ones who were more affected by that. Of course, even middle class people were affected to some extent. तो जैसे उसका एक एग्जांपल, नॉट एग्जैक्टली मैंडेट, लेकिन ये कलेक्टिव मेजर्स का कैसे वल्नरेबल ग्रुप्स के परिणाम हुआ, आप माइग्रेंट वर्कर्स को देखिए. 4 घंटे के नोटिस पे लॉकडाउन कर दिया पूरे देश में, 140 करोड़ लोगों के देश में. एंड देयर वर लाइक लैक्स एंड लैक्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स हु एब्सोल्युटली हैड नो वेयरविदाल टू सर्वाइव. भाई आप उसको एक प्लान तरीके से करते, पूरे देश में कोविड का एपिडेमिक का स्प्रेड इतना यूनिफॉर्म नहीं था. दैट इज व्हाट आई वाज कमिंग टू, कि इसके जो इम्प्लीकेशंस रहते हैं, कि इमीडिएट गाइडलाइंस, इमीडिएट प्रोटोकॉल्स जो बोले जाते हैं, तो उसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस या शॉर्ट टर्म इम्प्लीकेशंस क्या होंगे एक कॉमन मैन पे, इसके बारे में आई फील देयर इज सम लाइक यू आर सेइंग कि इसमें बैलेंस चाहिए. दैट इज व्हाट इवन आई फील. या, and that balance can be achieved only if you have a democratic public health setup, not an autocratic public health setup. As a public health professional, I can tell you there is a huge difference. And since its inception in public health, there have been these two tendencies. One is what can be now today called a militarized approach to public health. वायरस है, वायरस को कंट्रोल करना है, और उसका मतलब है कि सब लोगों को भी कंट्रोल करना है. अरे ठीक है, वायरस को कंट्रोल करना है, लेकिन लोगों को ऑटोक्रेटिकली कंट्रोल नहीं करना है. यू हैव टू डेमोक्रेटिक अप्रोच इज पीपल हैव टू बी ऑन बोर्ड, पीपल हैव टू बी सेंसिटाइज्ड, पीपल हैव टू बी इन्वॉल्व्ड, they have to be convinced, but you cannot coerce people. There's a big difference between this. So coercive approach to public health and a democratic and convincing oriented approach to public health, there's a difference between these two. So we definitely require collective measures, and people need to be brought on board even for certain collective measures at certain points of time. But it has to be done through a process of dialogue and process of sensitization and information being given to people, which was done in some states to some extent. For example, in Kerala, I think it was done in a somewhat better way, in the sense that more people are involved as volunteers. There was a greater level of dialogue and involvement of social groups. But in many other parts of the country, it was quite coercive in nature, and that was, not very appropriate. It could have been done in a more nuanced and more appropriate way, which would have balanced the collective rights and the individual rights. राइट सर, अभी आपने केरला का जिक्र किया, इसलिए एकदम मेरे दिमाग में आया कि रिसेंटली केरला हेल्थ बिल एक्ट जो पास आउट किए गए, तो दैट अगेन टॉक्स अबाउट कोएर्सिव मेजर्स इन शॉर्ट. तो हाउ कैन वी जज दिस? मुझे लगता है ये टॉपिक थोड़ा अलग, बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर शायद अलग चर्चा करना ठीक रहेगा. बट या जनरली स्पीकिंग, कहीं भी किसी भी स्टेट में अगर कोअर्सिव मेजर्स को ज्यादा एम्फसाइज किया जा रहा है, तो देयर नीड्स टू बी अ वॉइस अगेंस्ट इट, और एटलीस्ट देयर नीड्स टू बी अ डायलॉग. देयर नीड्स टू बी अ डायलॉग. What is lacking today, especially at the central government level in the public health system, is dialogue.
So if we have a system which only speaks and does not listen, then it's not going to work. This is very important. Right. You have to listen, and you have to have the willingness to dialogue. Then, through appropriate dialogue, of course, some appropriate balance can be achieved, or some kind of, a reasonable approach can be developed, but uske liye dialogue लगता है. आज बहुत जगह dialogue बंद होता जा रहा है, या सिर्फ एक ही narrative, एक ही प्रकार का एक sort of approach impose किया जा रहा है, which is not good for public health. It's definitely not good for democratic public health. And public health is a daughter of democracy. It is one of the daughters of democracy. आप ये याद रखिए, यूरोप में 19th century यूरोप में जब पब्लिक हेल्थ डेवलप हुआ, it was because the poor were dying from cholera, from all kinds of other infectious diseases, and everybody was getting affected, but the poor were especially affected. And then the reformers came up and said that, we have to do something, we have to save people. It was a kind of a popular interest which was uppermost in their mind, because of which public health measures like sanitation and other things gradually were introduced. So public health for public health to thrive and achieve its full potential, democracy is very important. Correct. Sir, I think इसीलिए हमने ये सीरीज एंड सेशंस का नाम ही डॉक्टर्स डायलॉग लिखा है. जैसे आप बोल रहे हैं that dialogue is important, so that is the reason maybe I thought of including this word dialogue for these sessions. So okay, sir, on a serious note, ये जब हम चीजें बोलते हैं, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं तो पॉलिटिकल व्हाट यू से इम्पोर्टेंस तो दिखाई देता है, वेदर इट इज ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस हो या कुछ भी हो. तो आजकल बहुत चर्चा है, मुझे भी ऐसा खुद को अभी 2-3 सालों से लगने लगा है कि यस, डॉक्टर्स रियली नीड टू अटेंड सच डिस्कशंस कि क्या पॉलिटिकली हेल्थ कहाँ पे जा रही है. So what you feel regarding the politics sector and healthcare sector? How are these related to each other? What is the importance today of bringing these two together and work? So what are your views regarding this? देखिए, anybody who has gone through medical college knows that the culture of medical education teaches doctor to just learn and obey. Mostly, and to remain apolitical, broadly speaking. तो डॉक्टरों को पढ़ाकू, मतलब जो पढ़ाकू स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो ज्यादातर डॉक्टर्स बनते हैं, और उनका they are very good at assimilating information, reproducing that information in exams, answering those kind of questions. But there is a part of medicine which also teaches you to think, and think which includes thinking differently. So, of course, a lot of medicine comes from tradition, and doctors are usually encouraged. Doctors usually tend to be a bit conservative because, जो हमारे सीनियर्स ने बोला ना वो सही है, उसी को करना है. तो वो एक जगह उसका कुछ महत्व भी है. But there is another tradition also within medicine and within public health, which basically says that you have to think. And all innovations in medicine took place because people broke from traditions. Somebody said, like Jan Swasthya, कि नहीं, ये पीने के पानी से कॉलरा हो रहा है. इस हैंडपंप का हैंडल निकालो, तभी कॉलरा एपिडेमिक कंट्रोल होगा. He did something different. Somebody said that anesthesia or whatever, all types of all innovations were because people also broke from tradition to some extent. And so this is one point. And the second point is that health is a deeply political issue. Health systems अलग अलग देशों में इतने अलग अलग क्यों हैं? आप थाईलैंड जाइए तो आपको बिल्कुल अलग सिचुएशन दिखाई पड़ेगी. हिंदुस्तान में अलग सिचुएशन है, श्रीलंका में अलग सिचुएशन है, यूएस में अलग सिचुएशन है, यूके में अलग सिचुएशन है. Even countries at a similar level of socio-economic development have quite different health systems. That's because of political, decisions. So health systems are very much dependent on the way in which a country makes its political decisions about health systems. And in our country, decisions have been taken, but they have not been debated. I'm talking about the health sector. Usually not debated as much as political issues, as social issues. So today, especially after the COVID epidemic, healthcare should become a political agenda in the good sense, not for X party or Y party. That is important. In the broad in a good sense. In the sense that it deals with people, it deals with people's interests,
It deals with different kinds of interest groups which have to be negotiated. You have a private hospital sector, you have a public health system, you have people, you have doctors, you have the pharma companies. In सबके बीच में ना, इन सबसे मिलकर के health system बनता है. तो इनको अगर negotiate करना है और public interest को maximize करना है, there has to be a different type of, people-centered politics for the health sector, which is very important, and that's what we are trying to do through Jan Swasthya Abhiyan and through Jan Arogya Abhiyan in Maharashtra. तो जैसे US में Obama care and healthcare coverage can become a major electoral issue. In certain other countries also healthcare has been issues in the elections. So हमारे देश में भी now after COVID especially, healthcare should be somewhere on the political agenda and the electoral agenda and the social agenda also. That is our firm conviction. That is what will lead to positive change. Yes. But what you feel like doctors should engage into such discussions, you feel, or even common man, how can these people engage themselves into this scenario? Why not? कि मेरी आवाज सुनो, ये कहाँ तक मेरी आवाज सुनो के लिए we need to get into a system, isn't it? If we need to change the system, we need to be in the system. ऐसा बोला जाता है. So no, not necessarily. That's not the only way to change a system. Another way of changing a system is to create a counter system. Yeah. To have a social organization or a social movement or a health movement which influences people on a large scale, which informs people on a large scale. क्योंकि अगर अभी जो existing system है उसमें कुछ deficiencies हैं और वो systemic deficiencies हैं, जैसे low budgets, low public health budget is a chronic and very serious problem in India. So we spend barely 1.2% of our GDP on public health, which is grossly insufficient. Or we know that if you make a list of 190 countries of the world as far as what percentage do they spend of their GDP on public health, we are in the bottom 10. हम जो विश्व गुरु बनने का सपना देखते हैं, you cannot become a विश्व गुरु by having a abysmally low spending on public health and weak public health systems. So this has to become a popular issue. Most people don't even know about this issue. So we have to develop a discourse, and we need health movements and broader social movements which raise health issues to influence the system in a positive way. And doctors definitely can play a part in that. You might be knowing that Chile, one of its very remarkable presidents was a medical doctor, Salvador Allende, and he introduced sweeping, social reforms in Chile. Unfortunately, he had to pay with it with his life later on, but he is still remembered in Chile as a pioneer of social reforms. And doctors are well placed to understand not just medicine, but also health in the broader sense. Food, nutrition, water supply, sanitation, environment. डॉक्टर से अच्छा कौन इनको समझ सकता है अगर समझना चाहे तो है ना. So the whole area of social welfare, it very much falls under the mandate of health professionals and definitely public health professionals. So there is no reason why doctors and health professionals should stay away from political issues, but it should be done in a way which is responsive to people and also I would say true to your own profession and the ethics of your profession. Not just a commercial approach, but an ethical approach to your own profession. If that is done, definitely doctors can contribute positively. In fact, they have not probably done enough. They've only been, there are groups of, there are associations of doctors, but they have mostly only looked after their own interests. They have not looked at the health system as much as has been required. तो आपके जैसे ये WHO जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो जन स्वास्थ्य अभियान है या मेडिको फ्रेंड सर्कल है, there are alternative groups even which have a base in the healthcare profession, which are thinking in a different way, trying to do something. Right. सर, ये आपका जन स्वास्थ्य अभियान जो है, तो इसकी करंटली महाराष्ट्र स्टेट अगर देखा जाए हमारा अपना, तो इसमें करंट स्टेटस क्या है ऑफ दिस कैंपेन? बिकॉज आई थिंक आई हैव सीन वन ऑफ योर वीडियोस, यू हैव वेरी एक्टिवली participated. I think you had gone and approached this Bharat Jodo Yatra also, if I'm not wrong. So I can see a lot of activism coming from your end. So where do you think all this is going? Are there any hopes of taking our agendas in a right manner, ethically forward? Do you have any hopes regarding this? Yeah, first I'll tell you about the campaign in Maharashtra.
So as you know, on 1st of October 2023, which is about 5 months back, in Nanded, the Government Medical College Nanded Hospital, in 24 hours, there were 24 deaths in the hospital. Yes. And half of those were neonates. It was unprecedented. And we immediately, as Jan Swasthya Abhiyan is a state level coalition which has dozens of organizations. We have about 70, 80 different NGOs, health groups, and hundreds of, members. So we immediately sent a team to Nanded. I was part of the team. And we investigated. We talked with nurses in the hospital. We visited the NICU. We visited the PICU. We talked with the administrators. And we also talked with patients and, social activists and tried to understand what happened in Nanded. So we have a full report on this, which if anybody who's interested, we can share that report. It's a very in-depth report, a 10-page report, which says that Nanded hospital deaths are the tip of an iceberg. Which means that what happened in Nanded is not just limited to Nanded. There are factors, major factors which are involved, which are actually almost everywhere. तो बाकी जगह में अभी उतना विजिबल नहीं हुआ या उतना शार्पली सामने नहीं आया है, पर जो प्रॉब्लम्स नांदेड़ में है वो महाराष्ट्र में लगभग अधिकतर जगहों में. And what we saw is that when peripheral and secondary level public health facilities are very weak. So for example, Nanded has 20 public hospitals besides the medical college hospital. वो बाकी जो 20 हॉस्पिटल्स हैं उनमें से 19 हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक वार्ड ही नहीं है. तो आप ऐसे सिचुएशन में सोच सकते हैं कि सारे जो सिक नियोनेट्स हैं सारे के सारे जो सिक बच्चे हैं वो कहाँ पहुंचेंगे? सिर्फ एक जगह. और वहां पे सिर्फ नांदेड़ के नहीं तो वहां परभणी और लातूर और हिंगोली और बाकी डिस्ट्रिक्ट के भी बहुत सारे पेशेंट आगे, क्योंकि वहां भी कुछ नहीं है या जो होना चाहिए वो नहीं है. इनफैक्ट इवन तेलंगाना और कर्नाटक से भी पेशेंट्स आते हैं. तो इतने बड़ा कैचमेंट में सिर्फ एक ही स्पेशलाइज्ड ऐसा हॉस्पिटल, और वहां द बक स्टॉप्स देयर, दे कैन नॉट रेफर. बाकी जगह से रेफर टू नांदेड़ जीएमसी लिख देते हैं. वहां पे जब इतने सारे पेशेंट आ जाते हैं, और फिर कुछ और टेम्पररी फैक्टर्स थे, देयर वाज अ लॉन्ग वीकेंड, देयर वर सम अदर फैक्टर्स, देयर वाज एन आउटब्रेक, उसकी वजह से सडनली दैट हॉस्पिटल वाज ओवरवेल्म्ड. हम लोग जब वहां गए तो एनआईसीयू में एक एक क्रेडल पे 3-3 नियोनेट्स लेटे हुए थे. उन्होंने कहा मेरे को कहाँ भेजें? वी हैव टू ट्रीट देम. We have 20 beds and we have 60-70 sick neonates who require care. So you can imagine what happened, probably in Nanded. And something similar is there in most other parts of Maharashtra. And therefore we started the campaign. And we said that now healthcare must be raised as a social and political issue in Maharashtra and right up till the 2024 elections. Lok Sabha and Vidhan Sabha. ये हमने उस समय डिसीजन लिया. उसके बाद हमने महाराष्ट्र के 8 अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट्स में आरोग्य हक परिषद, मतलब हेल्थ राइट्स कन्वेंशंस ऑर्गेनाइज किए. एंड दीज आर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र. सो वी डिड दीज इन नांदेड़ टू बिगिन विद. ऑफ कोर्स द फर्स्ट वाज इन नांदेड़, बट उसके बाद कोल्हापुर, सांगली, पुणे, नासिक, अमरावती, सोलापुर, नंदुरबार, ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में हमने इस तरह के कन्वेंशंस किए. और हर जगह लोगों से पूछा आपके एक्सपीरियंसेस क्या है. हमने छोटे छोटे सर्वेज किए वहाँ के जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं उनके बारे में. हमने नर्सेज से पूछा, आशा से पूछा, और हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग मुद्दे और कुछ कॉमन मुद्दे निकल के आए. उन सब मुद्दों को लेकर फिर हमने पीपल्स हेल्थ मैनिफेस्टो बनाया. और जो आपने पोस्टर अभी दिखाया, हमने अभी पिछले हफ्ते उसका एक स्टेट लेवल का आरोग्य हक संसद या एक हेल्थ राइट्स असेंबली ऑर्गेनाइज की. ओके, लेकिन सर ये आश्वासन के तौर पे सिर्फ रहता है या रियली इम्प्लीमेंटेशन तक जाएगा? This becomes a big question, isn't it? Because when we work for something, it needs to be implemented also, and it should not just be on paper or something like that. क्योंकि ऐसे बहुत से मैनिफेस्टो में हम लोगों ने भी कुछ चीजें सजेस्ट की है, but we are not sure whether these will really be taken up as an agenda. So इस ऐसे मौके पे what is the advice that you feel, or what is your view regarding this? How to deal with these situations? Yeah, see, democracy का एक essential element है aware and organized people. Democracy, and which is not just one day in 5 years. It has to be every day of every month of every year. वो जब होता है ना तो फिर डेमोक्रेसी लाइव होती है. अनफॉर्चुनेटली हमारे पॉलिटिकल पार्टीज भी अक्सर क्या चाहते हैं कि लोग एक्टिव ना हो,
सिर्फ 5 साल में एक बार जब हम उनको बोलते हैं ना, तो हमको वोट दे दें, उसके बाद वो घर में जाके सो जाए और फिर we'll keep doing what we want to do. That's not the way democracy works. So what we have been arguing, and we have actually demonstrated this in practice also, community-based monitoring of public health services. We had organized, and we still are doing in some form, in about 1,000 villages across Maharashtra with the government. And wherever this community-based monitoring was implemented, which is what you're saying, कि ensuring implementation, लोग जाते हैं PHC में, वहाँ दवाई है कि नहीं, डॉक्टर आ रहे हैं कि नहीं, एम्बुलेंस चल रही है कि नहीं, लैब फैसिलिटी फंक्शनल है कि नहीं, ये सब जब देखते हैं रेगुलरली, और फिर समय समय पे जन सुनवाइयाँ या जन संवाद करके इन मुद्दों को उठाते हैं अधिकारियों के सामने, पंचायत प्रतिनिधियों को इन्वॉल्व करते हैं, बाकी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को भी इन्वॉल्व करते हैं, तो फिर चेंज होता है. Change can happen, but people have to get involved. They have to have the space to get involved, and they have to also be organized and active enough to, monitor what is happening on the health front. Same is true for the private sector. कि जो 2021 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नए रूल्स बनाए प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए, MNHRA जो एक्ट के अंतर्गत, उसमें ये क्लियरली लिखा है कि every private hospital in Maharashtra, actually every hospital is supposed to display its rates. It's supposed to display the patient's rights charter. And every district has to have a grievance redressal cell to support patients and to help them. We saw this was not happening. तो फिर हमने 3 शहरों में, नासिक, पुणे और सांगली में, हमने पेशेंट्स राइट्स कन्वेंशंस ऑर्गेनाइज किए, अधिकारियों से जाके लोग मिले, उन्होंने इसके ऊपर प्रेशर डाला, तो फिर कम से कम ग्रीवेंस रेड्रेसल सेल तो शुरू हुए. और कुछ हॉस्पिटल्स ने पेशेंट्स राइट चार्टर और रेट लिस्ट लगाना शुरू किया, बट स्टिल इट्स जस्ट अ स्टार्ट. So when people get activated on the health front, then definitely more change happens, and that is what we need to do from the ground. And on this basis, of course, we also need to dialogue with political parties, which we did on 17th of February last week. वो डायलॉग भी हमने किया, लेकिन हम सिर्फ डायलॉग तक ही सीमित नहीं रहेंगे. हम हेल्थ का मुद्दा बनाते रहेंगे लोगों के बीच में, और सिस्टम के ऊपर भी दबाव डालने के लिए, तभी चेंज आएगा. वो एक दिन में या एक डायलॉग से नहीं होगा, लेकिन ऑफ कोर्स we have to keep doing this continuously. Right. And not only at the state level, but across the state. हाँ, लेकिन ये जो आप यूनिवर्सल हेल्थ UHC के बारे में बहुत चर्चा है आजकल, तो एक्चुअली आई वुड लाइक टू नो द डिफरेंस इटसेल्फ, लाइक व्हाट इज एग्जैक्टली UHC, because it's like universal health care and universal health coverage. So like what you're saying, it's 2 different terminologies altogether. So can you just explain what is the exact difference between these wordings, that is UHC, and how we are thinking of implementing it? Yeah, so there are more than one interpretations of the term UHC, and as you mentioned, the more kind of dominant use is universal health coverage, which is used by WHO, which is used by World Bank, and which is used by many governments also. And उसका एक कवरेज जैसा आप सोच सकते हैं, इंश्योरेंस कवरेज, वहां से वो टर्म आया है. सो लोगों को गवर्नमेंट कुछ सब्सिडाइज तरीके से एक हेल्थ इंश्योरेंस या सम काइंड ऑफ हेल्थ एश्योरेंस का एक कार्ड देगी, कुछ स्कीम बनाएगी, और उसके तहत लोगों को पब्लिक हेल्थ सिस्टम में या कुछ हद तक प्राइवेट सेक्टर में कुछ सर्विसेज मिलेंगे. दिस इज ब्रॉडली द अप्रोच ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, की एक्सपैंड द कवरेज ऑफ केयर, क्यूरेटिव केयर. Universal health care, the other interpretation, is much beyond this. Universal health care, and incidentally, coverage is usually limited to hospitalization care. Usually, okay. It doesn't deal with outpatient care. It may not even deal with very common, level of secondary hospitalization. It mostly deals with, complex, expensive, and tertiary care type of procedures, operations, especially surgeries. उस पे उसका focus रहता है. लोगों को इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर चाहिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ऑल ऑफ दिस. As Indians, majority of our health spending, out of pocket spending, is an outpatient care because it's so common. And that's not covered usually in these coverage type of schemes. Universal health care says that we need integrated care from primary, secondary to tertiary, all levels. It has to cover all sections of the population. It cannot be targeted कि चलो गरीब लोगों को कुछ कार्ड दे दिया, हो गया काम. No, universal health care is for everybody, because when the middle class is also involved, the poor are also there, the middle class is also there, then the voice comes in for accountability,
for quality. It's not second-rate care. Universal health care has to be first-rate care for everybody. It involves putting in more resources, but the outcome is much, much better than just saying some coverage for some people for some of the illnesses, which is what usually happens. And जो हमारे देश में भी अभी चल रहा है, जो आपको पता है, जो सरकार की जो health insurance या health assurance schemes है. So universal health care is actually much more comprehensive. Doctors and health workers also have an important role to play in demanding this, and also they will benefit a lot if we actually have a universal health care system in our country. So that's why what we have talked about is right to health care and universal health care system. ये दोनों, these go together. So sir, मैं being a homeopath, मैं ये थोड़ा ऐसा देखूंगी इसके तरफ. So universal health care should also contain all different medical systems as well. What do you say? Yeah, this is an area of discussion and debate, and इसमें अलग-अलग लोगों की अलग-अलग राय है. हमारा जो perspective है, that is of medical pluralism. Medical pluralism means that people should have a choice, and they should have a reasonable choice. आपको एलोपैथिक केयर लेना है, जो शायद ज्यादातर लोग लेंगे, तो वो अवेलेबल होना ही चाहिए. लेकिन किसी को अगर आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक केयर लेने की इच्छा है, तो उनके लिए भी वो ऑप्शंस अवेलेबल होने चाहिए. वो हर गांव में या हर एकदम जगह में शायद नहीं होंगे, लेकिन देयर शुड बी सम रीजनेबल ऑप्शंस कि नहीं, मुझे आयुर्वेदिक इलाज कराना है. सो वी स्टार्ट विद व्हाट वी कॉल मेडिकल प्लूरलिज्म, बट वी मूव टुवर्ड्स व्हाट इज कॉल्ड मेडिकल इंटीग्रेशन. Integration means drawing upon the best practices in each of these healing systems and offering the patient what is the best for their health. That is actually the ultimate objective of any health system. It should be. आप चाइना में देखिए उन्होंने किस तरीके से एक्यूपंक्चर को इंटीग्रेट किया है उनके हेल्थ सिस्टम में. They even do anesthesia through acupuncture. So they have drawn upon their traditional healing system, but of course very much in combination with the modern medicine and in a complementary way. So moving from medical pluralism towards integration, integrated healing systems is a direction that the UHC system should take. And that's not difficult. We have large numbers of homeopaths and Ayurvedic physicians in our country. But unka, unfortunately, they have been mostly converted into second-rate allopaths. कि चलो तुम antibiotic, मतलब they have been educated in their own system, but now they are mostly practicing 90%, allopathy, which is actually not all. I agree. Yes, I agree. Certain doctors have, but not all. There are people who are authentically practicing their individual system of medicine. Yeah, so that option can be given. We can also say that if you want to become what we can call a basic doctor, you undergo some formal training in allopathy and work as a basic doctor. But if you want to continue in your own, system like Ayurveda or homeopathy, then you should be given that space and that kind of support. There needs to be research also in these systems. Modern medicine और इन बाकी systems में थोड़ा फर्क ये है कि इन systems में ना research उस प्रकार की systematically कम होती है, उसको support भी कम दिया जाता है. So there needs to be research further. No system of medicine can be static. It has to keep upgrading. It has to continually be evaluated, assessed on the basis of some rational criteria. So with that, both support and rational approach to these systems is required as a part of a UHC system. Correct. That is important, right? Sir, any of your personal experiences regarding, regarding taking treatment apart from allopathy? Your own personal. Do you believe in this system of medicines? You being an allopath, I'm asking you this question. What are your views? Or you are again coming down to evidence-based medicine. What do you feel? Yeah. Okay. So the point is that for an ordinary patient, they are interested in the outcome. And the health professional or the expert is interested in the system or the mechanism. So as a being educated in modern medicine, if I look at some of these systems, what I see is a kind of a mixed bag, okay, in which some elements have historically, obviously something has been selected over centuries. People have used it, they have tried it out. So there are some elements which definitely people must have benefited in some form. Otherwise, it would not have been continued. So there is definitely there are some positive elements there.
And like Ayurveda itself, because it's based on even modern medicine, many of our medicines were originally derived from plants, and then they were purified, they were extracted, then they were chemically manufactured. So obviously plants are the base of most of Ayurveda, for example, and they have some healing properties. But as I said, that if these systems, they need to be continuously refined, updated and upgraded, refined. They need to be updated, and those those elements which are useful, which are leading to good health outcomes, and they should be taken up. Chronic illnesses, non-communicable diseases, these are areas where even modern medicine doesn't have much to offer in terms of cure. It's mostly management. Arthritis, diabetes, hypertension, and so many things. So definitely we can have a approach where we look at the positive practices in these other healing systems and to kind of integrate them or use them in a complementary way with modern medicine. I would be willing to do that. Fortunately, I don't have any major illness as of now, but if I do, or somebody in my family does, I would be open to this kind of a complementary approach. But having a scientific training over, I'm not going to give up my my basic scientific. Science is based on skepticism. All science is based on asking questions. So that will probably continue. So I think you must be aware that commercialization is actually the problem. Right. So you must be modern aware medicine के साथ बहुत सारे जो उसके डिस्टॉर्टेड फॉर्म्स आए ना सामने, वो कमर्शियलाइजेशन की वजह से है. ओवर यूज ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, ओवर यूज ऑफ मेडिकेशन, अननेसेसरी सर्जरीज, ये सब जो हो रहा है, जिसकी वजह से आज लोग त्रस्त हैं या लोग सेटिस्फाइड नहीं है, और वो फिर उसका पूरा दोष मॉडर्न मेडिसिन के ऊपर डाल देते हैं. एक्चुअल ज्यादातर दोष जो है ना, वो इसके कमर्शियलाइजेशन की वजह से है. So if these modern medical, whether investigations or medicines or surgery, if these are used in a judicious way, only when required you use the intervention, when not required you don't use the intervention. यदि ऐसा होता तो उसके साइड इफेक्ट्स, आइट्रोजेनिक प्रॉब्लम्स, ये सब कम हो जाते. जीरो नहीं होते, लेकिन कम जरूर हो जाते. लेकिन कमर्शियलाइजेशन की वजह से जब डॉक्टर को ये बताएगा कि आप जितने ज्यादा टेस्ट लिखोगे उतना आपको उसका कमीशन मिलेगा, आप जितनी दवाइयां प्रिस्क्राइब करोगे फार्मा कंपनी आपको उतना उसका रिटर्न देंगे, आप जितनी ज्यादा सर्जरी करोगे आपका इनकम उतना बढ़ेगा. जब ऐसा हो जाता है तो फिर एक सप्लायर इंड्यूस्ड डिमांड क्रिएट हो जाता है, और फिर डॉक्टर पेशेंट को कन्विंस करने लगते नहीं, तुम्हारा एमआरआई करना तो बहुत जरूरी है, और ऑपरेशन भी हम कर ही देते हैं, क्यों इसके करें, सिजेरियन सेक्शन नहीं भी जरूरी है तो भी हो जा रहा है, हिस्टेक्टोमी की जरूरत नहीं भी है तो भी कर दिया जा रहा है. तो ये जो सब हो रहा है, ये these are distortions induced by commercialization. So medicine, sir, this worry of commercialization, I think is applicable to other medical systems also. That even we as doctors worry that Ayurveda or homeopath, it should not be go into this mode again, and we want to safeguard our own principles कि जिसपे ये सब medical systems रही है आज तक. So the worry, I think, is common for all medical systems. Only thing is allopathy has taken the first step into it. So Ayush and WHO collaboration, you must be aware, recently जो हुआ है गुजरात में, Global Traditional Center. So we don't know where this is going to go. We just hope that things be still the way what we doctors as traditional, what actually traditional is not the right term to be used, because all medical systems definitely has evidence behind the science, because it's been in practice since years together. But I hope that this goes in a right way. Anyways, sir, now since you are a founder of this ADEH, that is Alliance of Doctors for Ethical Healthcare. So can you tell something about this? Like when you're talking about ethical healthcare, what exactly you mean by that? Okay. So basically this platform emerged after the publication of our book, Dissenting Diagnosis. And we had interviewed 78 doctors across the country for this book.
और हमने उन हर एक के इन डेप्थ इंटरव्यूज लिए थे और उनके ही कोट्स लेकर के ये किताब बनी है. अगर आप किताब को पढ़ेंगे तो यू नो दैट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बुक is entirely based on interviews of doctors. What are doctors saying about commercialization of healthcare and its impacts? And as you can see, many of them were very critical, and they spoke very frankly that over commercialization की वजह से किस तरह हमारा profession affect हुआ है. So doctors working in corporate hospitals were telling how they are facing targets which are imposed by the hospital management. Many other doctors are talking about the influence of the pharma industry, which is continuously pressurizing them to prescribe Me Too drugs, which are maybe marginally better, but actually much more expensive and not in the patient's best interest. And so many other things. Investigations unnecessary किस तरीके से हो रहे हैं. And some doctors are joining the bandwagon. Some doctors are reluctant to join, but still they join under pressure. And a few are trying to resist this, but they were finding themselves alone. So we said, let us bring such doctors together. And that's why we formed ADH, Alliance of Doctors for Ethical Healthcare. And these are doctors from Punjab to Kerala, from West Bengal to Maharashtra. We found such doctors everywhere. उनकी संख्या कम है, लेकिन ऐसे डॉक्टर्स थे जो कि कुछ करने की कोशिश कर रहे थे. We called it ethical doctors for ethical healthcare. We did not call it ethical doctors because that would have been a very sort of ambitious claim. आज प्राइवेट प्रैक्टिस में जो भी डॉक्टर काम कर रहे हैं वो 100% ethical होने का क्लेम कितना कर सकते हैं? It's tough. So many people have to do some kind of balance, but still at least they want to practice ethically and they make some effort to do that, and they resist certain kinds of pressures. कम से कम ऐसे डॉक्टर्स को हमने लेने की कोशिश की. So that is the platform, and we had a very good national conference in AIIMS in 2018 where we brought together all these doctors on a common platform, and we have some publications and we have made some interventions in different areas. For example, in the issue of stents pricing or medicine pricing and various other issues which concern doctors and also concern people at a broader level. So it is a platform which... Sir, मैं यहाँ पे एक सवाल मेरे मन में आया अभी बात करते करते कि when you were talking about this dissenting diagnosis book, तो ये भी पब्लिश की गई बाय पेंगुइन. ओके. और आप जब ये ADEH जैसे प्लेटफॉर्म्स बनाते हैं तो when doctors like you and us who are trying to speak the fact or trying to follow the ethics or trying to question the ethics itself, तो ये जब हम लोग करते हैं तभी criticism from other quarters of पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स या डॉक्टर्स कभी आपने एक्सपीरियंस किया? हाउ डिड यू टैकल ओवर दैट? बिकॉज अभी वी आर फेसिंग समथिंग क्वाइट सिमिलर कि हम लोगों का जो नरेटिव है तो बहुत लोग दे डोंट फॉल इन लाइन विथ आवर थॉट्स एंड दे फील दैट वी आर making our own theories or something like that. They try to suppress what we want to tell. Many publications don't even publish certain ethical articles also. Some videos are taken down. So in general ये जो censorship होती है तो इसके बारे में what you will talk? What is your view? Yeah, that's a big topic actually. उसके ऊपर आपको एक अलग सेशन रखना चाहिए. वो रखा था मैंने, लेकिन अब आप आए हैं तो स्पेशलिस्ट इसलिए मैं एटलीस्ट कुछ तो पूछूंगी आपको. Yeah. So what? See, there is an entire politics of knowledge. Certain kinds of knowledge are privileged. Certain kinds of knowledge are marginalized. जैसे समाज में है ना, कुछ लोग privileged हैं और कुछ लोग marginalized हैं बहुत सारे, तो ऐसे knowledge के क्षेत्र में भी है. So there is a dominant paradigm, and the dominant paradigm is often linked to the larger system, which is corporate oriented, which is commercially oriented. So more medicines are better. ये generally है. So some doctor says no, actually no medicine is required in this illness, or only one medicine is sufficient. तो वो marginalize हो जाता है. Actually वो डॉक्टर जो बात कह रहे हैं वो शायद पेशेंट के हित में है और रैशनल एथिकल केयर के डायरेक्शन में है, लेकिन वो फार्मा कंपनी, अगर कल को हम दवाइयाँ खाना बंद कर दें, बहुत कम कर दें, तो फार्मा कंपनी का तो प्रॉफिटियरिंग तो वो ग्राफ जो ऊपर जा रहा है वो नीचे जाने लगेगा. सो देन देयर इज अ dominant discourse which tends to either actively suppress or at least marginalize these kind of alternative views.
सो एडीएच के तौर पे जब हमने बातें करनी शुरू की, महाराष्ट्र में माय कोलीग डॉक्टर अरुण गद्रे, he moved across Maharashtra and held discussions and release of the book. The Marathi version, early Marathi version is called Kaifiyat, which he has written, which is a part of the book, but the main critical part. So उसको लेकर के जब ये चर्चा शुरू हुई तो उसके बाद there was a backlash from an organized section of the private medical profession, one particular association. That is what I was asking. They did not. They said कि आप जो है ना डॉक्टरों की बदनामी कर रहे हैं. उन्होंने मेडिकल काउंसिल, महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल में जाके कंप्लेंट कर दिया. अब वो डॉक्टरों की बदनामी नहीं कर रहे थे, वो सच्चाई बता रहे थे. एक्चुअली वो डॉक्टरों के हित में बात कर रहे थे कि डॉक्टरों को अपने प्रोफेशन के साथ ईमानदार होना चाहिए. उनको अपने जो मेडिसिन में जो कुछ हमने सीखा है टेक्स्ट बुक्स में अपने मेडिकल कॉलेज में, उसके हिसाब से काम करना चाहिए. और जो हमारे ऊपर जो कमर्शियल इन्फ्लुएंसेस हैं, इनको हमें रेजिस्ट करना चाहिए. और जहां तक हो सके हमको एक रैशनल एथिकल तरीके से प्रैक्टिस करना चाहिए. और जो बुराइयां हैं वो है. अगर आपने बोला कि बहुत ज्यादा सिजेरियन हो रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? ही इज अ गायनेकोलॉजिस्ट, सो ही सेड कि देयर आर लॉट ऑफ अननेसेसरी सिजेरियंस एंड हिस्टेक्टमीज टेकिंग प्लेस, व्हिच शुड इट्स नॉट अ गुड थिंग फॉर वुमेन, इट्स नॉट अ गुड थिंग फॉर सोसाइटी. सो उसका ही बैकलैश आया. तो देखिए किसी भी युग में अगर आप सच बोलेंगे और बिल्कुल जिसको कहते हैं मतलब प्योर, अगर आप सच बोलेंगे तो जो लोग पावर में है ना उनको कई बार ये पसंद नहीं आता है, क्योंकि उनकी जो सच्चाई है वो सामने आने लगती है और एक ऑल्टरनेटिव व्यू लोगों के बीच में जाने लगता है. तो ये आप जो कह रहे हैं ये होता है और हमने भी इसको फेस किया, लेकिन इससे हम लोग कोई ये नहीं हुए, मतलब हमने अपने काम को रोका नहीं. डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए. हाँ बिल्कुल भी नहीं. इसका मतलब ये है कि आपकी बात कहीं ना कहीं किसी को पिंच कर रही है, इसका मतलब उसमें कुछ सच्चाई है. अगर आप बिल्कुल ऐसे रैंडम चीज बोलेंगे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप कोई पते की बात बोलेंगे जिसमें कुछ सच्चाई है तो फिर जिन लोगों को उससे प्रॉब्लम है ना वो कुछ हद तक तो रिएक्ट करेंगे. So we should take this positive criticism. के बारे में भी कुछ पेशेंट्स राइट्स चार्टर के बारे में भी कुछ बात करनी चाहिए, क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट आपने शुरू में मेंशन किया था. तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ कि हमारे देश में ना, और वैसे ये तो पूरे दुनिया भर में ही है, कि देयर इज अ बिग एसिमेट्री बिटवीन डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स और बिटवीन अ हॉस्पिटल एंड अ पेशेंट. इट्स अ नॉलेज एसिमेट्री एंड देयर इज आल्सो अ पावर एसिमेट्री, बिकॉज हेल्थ केयर इज वन फील्ड वेयर यू डोंट डिसाइड which care you are going to obtain. When you go to the market for anything else, you decide कि मुझे ये साबुन खरीदना है, ये मोबाइल खरीदना है, ये मोटरसाइकिल खरीदनी है. लेकिन जब आप हॉस्पिटल में जाते तो आप नहीं तय करते कि आप कौन सी दवाई खाने वाले हैं या कौन सा इंजेक्शन लगवाने वाले हैं. It's the doctor and the medical institution which tends to decide that. So that leads to a situation where patients become very vulnerable because they're handing over the decision making regarding their own body and even their own life to somebody else. And because of this knowledge asymmetry and because of the vulnerability, patients have to be protected and they need certain rights. Right to information, right to second opinion, right to their records and reports, right to informed consent, right to confidentiality, right to privacy, etc. etc. और ये सब इन सब राइट्स को मिला करके पेशेंट्स राइट्स कहा जाता है. पूरे दुनिया भर में पेशेंट्स राइट्स ये एक कैटेगरी वेल नोन है. बहुत सारे और देशों में इसको लेके कानून है या गाइडलाइंस हैं. हमारे देश में ऐसा कुछ भी नहीं था टिल सम इयर्स बैक. तो हमने पहले महाराष्ट्र में एक शुरुआत की, यहाँ पे आईएमए जो है पुणे का और जन आरोग्य अभियान, हमने मिल करके एक पेशेंट्स राइट्स चार्टर बनाने की कोशिश की. फिर मैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में मैंने इस मुद्दे को उठाया कि ये तो नेशनल लेवल पे होना चाहिए पेशेंट्स राइट्स. As a member of the core group on health, I raised this issue and it was discussed in NHRC. I prepared the first draft, but many others contributed. And NHRC came out with this kind of a patients' rights charter in 2018, which is very important. उसमें 17 rights हैं patients के. वो हेल्थ मिनिस्ट्री को दिया. उसके बाद हेल्थ मिनिस्ट्री ने कुछ ज्यादा किया नहीं. फिर हमने जन स्वास्थ्य अभियान के तौर पे जंतर मंतर पे एक डिमॉन्स्ट्रेशन ऑर्गेनाइज किया, जिसमें हमारा मेन एक मांग था कि पेशेंट्स राइट चार्टर को अभी मिनिस्ट्री को इम्प्लीमेंट करना चाहिए. तो उसके बाद मिनिस्ट्री ने 2019 में एक सर्कुलर निकाला, फिर 2021 में उसको एक्सपैंड किया. अभी मिनिस्ट्री का एक सर्कुलर है जो पूरे देश के सारे राज्यों को भेजा गया है, जिसमें 20 पेशेंट्स राइट्स हैं और 6 पेशेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है. ये 99% लोगों को पता ही नहीं है कि मेरे पब्लिक या प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं भी मैं अगर हूँ
तो मेरे कुछ राइट्स हैं और इन राइट्स को मुझे डिमांड करना चाहिए। हमारा ये कहना है कि अब इन राइट्स को और स्ट्रेंथन करना चाहिए। दे हैव टू बी पार्ट ऑफ आइदर सम लीगल फ्रेमवर्क और एटलीस्ट देयर हैज टू बी अ रिड्रेसल सिस्टम व्हिच इज लिंक्ड विद दिस, कि अगर मेरा राइट वायलेट होता है तो मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे जानकारी नहीं दी, मेरा रिपोर्ट नहीं दिया, मुझे सेकेंड ओपिनियन नहीं लेने दिया, मेरे पेशेंट की डेड बॉडी को हॉस्पिटल ने रोक लिया हाँ, या मुझे जबरदस्ती किया कि आप इसी हॉस्पिटल से अपनी सारी दवाइयां खरीदे, हमारे फार्मेसी से। ये सब राइट्स के वायलेशंस अभी भी चल रहे हैं। तो आज इसको एक तो बहुत बड़े स्तर पे लोगों को पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि हमारे पेशेंट्स राइट्स हैं, और दूसरा है कि इसको पेशेंट्स के जब राइट्स वायलेट होते हैं तो उनको कंप्लेंट्स को रिड्रेस करने के लिए एक सिस्टम भी होना चाहिए। और कहीं ना कहीं इसको रेगुलेशन, जो लार्जर रेगुलेशन आज जरूरी है पूरे हेल्थ केयर सेक्टर का, उसका एक हिस्सा पेशेंट्स राइट्स भी है। क्वालिटी ऑफ केयर, रेट्स ऑफ केयर, स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर, rationality of care, all these things need to be appropriately regulated, but in a appropriate way which is keeps into account all the realities, the ground realities of the health system, of the medical profession, of the state of medical knowledge. So it has to be an appropriate framework. It should not be just a bureaucratic type of framework. उसमें अलग अलग स्टेक होल्डर्स को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, बट उसके हिस्से के रूप में पेशेंट्स राइट्स का चार्टर ये डेफिनेटली इंप्लीमेंट होना चाहिए. पीपल शुड नो अबाउट इट एंड दे शुड बी अवेयर that they can, insist on these rights in any healthcare setting. So public में awareness create करना भी एक बहुत I think responsibility है for any organization as well or any group who is working towards these practices. Sir, एक सवाल और एक मैं पूछना चाहूंगी कि अभी ये जो पैंडेमिक ट्रीटी के बारे में बहुत बातें हो रही है, पार्लियामेंट में भी रिसेंट में कुछ वक्तव्य हुआ इसके रिलेटेड, तो एज अ पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट व्हाट आर योर कपल ऑफ पैंडेमिक ट्रीटी हाँ, सो आपकी क्या राय है? As an individual, I would today ask you as an individual, forget about public health speaker also, as an individual, what you feel? See, again, the same kind of factor comes in that there is a kind of a dominant discourse going on about the pandemic treaty, where country governments, international organizations, they're trying to put in place some sort of regulations and supposedly learning from the COVID pandemic experience. So in general, that is not it's not in itself, in principle, it's not incorrect. But the point is कि अगर ये जो पैंडेमिक ट्रीटी है ये टॉप डाउन होता है और इसमें गवर्नमेंट्स पावर्स आर इंक्रीज बट पीपल्स राइट्स आर नेग्लेक्टेड, देन देयर विल बी अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम, यू सी. सो ऊपर से इंपोज होने वाली पावर स्ट्रेंथन होगी और नीचे से लोगों के जो राइट्स हैं वो उनको अगर सप्रेस कर दिया जाएगा तो दैट विल नॉट बी अप्रोप्रिएट. सो सम ऑफ द ह्यूमन राइट्स Some of the human rights bodies like Amnesty and so on, they have come out with statements about the pandemic treaty. As a people's health movement also, we have responded to the pandemic treaty by basically saying that while public health regulations are important, public health measures are important and they need to be ensured appropriately. Yes. If there's an epidemic or there's something like the starting of a epidemic, it needs to be controlled. And for that, various kinds of coordination will be required. In fact, there has to be an element of equity. The rich countries should not just impose their views on the poor countries. कि तुम्हारे देश में एपिडेमिक है, हमारे देश में ना पहुंच जाए, इसके लिए हम तुम्हारे ऊपर पैंडेमिक ट्रीटी इंपोज करेंगे. ये जो थोड़ा सा अप्रोच है ना, थोड़ा यूरोप और नॉर्थ अमेरिका सेंट्रिक, इसके बजाय डू वी हैव रिसोर्सेज? आप रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं क्या? कम से कम नॉलेज रिसोर्सेज शेयर करिए. पेटेंट्स के ऊपर पूरा आपने मोनोपोली बना के रखा हुआ है, तो लोगों को आवश्यक जो वैक्सीन या दवाई मिलनी चाहिए तो नहीं मिल पा रही है. So there has to be equitable, participation and equitable kind of role for developing countries, for lower middle income countries, and within this also for the people in these countries, that their voice also has to be heard. And it cannot be a treaty which overrules international human rights obligations. So any international pandemic treaty must also take into cognizance international human rights obligations and various agreements. It cannot just be left to governments. जैसे बोलते हैं ना कि war is too important to be left to the generals. So public health is too important to be left only to governments. Public health में public ये शब्द है.
लोगों का भी एक रोल है पब्लिक। So, what कॉमन मैन को क्या चाहिए वो भी इम्पोर्टेंट। जस्ट क्या चाहिए, बट उनके राइट्स जो हम लोगों के राइट्स जो हम मानते हैं कि you have certain kinds of freedoms, you have certain kinds of freedom of expression, freedom of movement, freedom of various other kinds of freedom and rights to certain life, right to life के जो अलग-अलग ये है उसके implications हैं. So these need to be kept on board. And freedom to question as well. Freedom to question as well. Yeah, because course. When we question, even questioning is subdued nowadays. We are not supposed to even question. So that is also important. Definitely. Right. So sir, आज का जो अपना टॉपिक है हेल्थ केयर फॉर मुनाफे के लिए या लोगों के लिए, सो एट द एंड ऑफ दिस सेशन आप इस टॉपिक का नेम जो सिलेक्ट किया है हम लोगों ने, तो इसके बारे में कुछ चीजें बताइए कि why we are choosing this topic for today's discussion, कि मुनाफा या लोग. What you will say about this? Yeah, so the whole idea is that today, if you look at Maharashtra, and even to some extent you look at India, I'll start with Maharashtra. Maharashtra has enough healthcare resources to ensure good quality healthcare can become accessible to each and every person in this state. We have the third largest number of medical colleges in the country. We have the largest number of pharma clusters in the country. We have the largest GSDP among all states in the country. We have a relatively high per capita income, and which means that both financial resources and healthcare resources are available. But these are not properly organized. These are not equitably distributed. These are not managed in a way which will maximize public interest. It's commercial interest which is mostly dominating. And because of that, some actors are making profits. They are, extracting, profits from this entire situation. And many people are suffering because they don't get basic healthcare. This situation must change. Our healthcare resources, first of all, have to be increased overall. And those resources which are available, they have to be properly organized in a way which is equitable, which is scientific, which responds to the needs of the entire public, and not just corporations and pharma companies and large commercial private hospitals. So there needs to be a change in our health system, and that will be based on the right to healthcare being made available to everyone. Nobody should be denied healthcare. It's a basic human right. तो राइट टू हेल्थ केयर का अप्रोच लेके इसीलिए हमने अपना मैनिफेस्टो भी बनाया है अभी 2024 के इलेक्शंस के लिए. That has to be basically made widely known to everybody that there is an alternative approach. नहीं तो लोगों को ऐसा लगता है कि यही कमर्शलाइज्ड, यही प्राइवेटाइज सिस्टम जिसमें टूटी फूटी पीएचसी है और महंगा प्राइवेट अस्पताल है, पीएचसी में मतलब केयर नहीं है, वहाँ फ्री है लेकिन केयर नहीं है, और वो प्राइवेट अस्पताल में केयर है लेकिन वहाँ फ्री नहीं है, तो हम जाए कहाँ? So especially poor people, lower middle class people are really faced with a huge challenge. So you know that the per hospitalization expenditure in a private hospital in Maharashtra is something like 42,000 rupees. That's the average, and the actual amount may go into lakhs. And in COVID, we have seen the kind of scale of overcharging where people will charge 33,000 to 40,000 rupees per day on COVID care in a private hospital. This is our study. This Sati study has shown. So ये जो सब huge amount of जो ये सब कमर्शलाइजेशन की वजह से जो सब इम्पैक्ट चल रहा है, ये चेंज होने की जरूरत है. वो तभी चेंज होगा जब लोग मिल करके आवाज उठाएंगे और उनके साथ में हेल्थ प्रोफेशनल्स भी अपनी आवाज को जोड़ेंगे. Both have to come together. That is very important. So health professionals alone cannot. And people alone cannot. At the end of this session, मैं हर गेस्ट स्पीकर को एक सवाल पूछती हूँ आखिरी में, आपको भी पूछती हूँ कि आपको अगर मैं बोलूँ कि एक मैसेज दीजिए कॉमन पब्लिक को, डॉक्टर को या पॉलिसी मेकर को, तो आप एक मैसेज क्या दोगे? Let us work together to establish the right to healthcare for all and a system for universal healthcare in India, which will do justice to all people, which will be fair and will be beneficial even for all healthcare professionals, and which the government will be able to support, and which will be very popular
in all sections of society. We need a right to healthcare and a system for universal healthcare as soon as possible in this country. Right. So thanks a lot, sir, कि आप यहाँ पे आके इतना अच्छा अपने समय देके you try to share all your expertise as well as views. आपको ये doctors dialogue sessions कैसे लगे? How do you see these? It's a good attempt. At least you're trying to involve people and different types of speakers you have invited. Yes. उनके views थोड़े अलग-अलग भी हैं, but generally speaking, it's expanding the discourse. It's bringing in new voices or alternative voices in the public platform. And as I said, democracy is so important, and that's why your dialogues are important. Because if we don't have dialogues, and there can be even difficult dialogues, there can be dialogues between people who have different opinions. That's not a problem. In fact, those dialogues are often quite productive. लेकिन वो dialogue अगर रुक जाएगा और सिर्फ एक ही सुर रहेगा और बाकी सारे तो फिर ना हेल्थ हो पाएगा, ना पब्लिक हेल्थ होगा और ना डेमोक्रेसी रहेगी. तो हम सबको उसके लिए काम करना चाहिए और आपका जो एफर्ट है, it's definitely a good effort. I fully congratulate you and I would support this. Yes. And sir, मैं बता दूं ये Q5 नेटवर्क हमें बहुत हेल्प कर रहा है. आशुतोष पाठक जी इसके डायरेक्टर है, क्योंकि बहुत से प्लेटफॉर्म्स पे ऐसी चर्चा खुलेआम से it's difficult to have a different opinion on many of the platforms. बहुत बार वीडियोस भी डाउन किए जाते हैं, but because of Q5 हम लोग ये चर्चा कर पा रहे हैं. अवेकन इंडिया मूवमेंट भी, जिसे हम मराठी में फरवर कहते हैं, तो वो कंसर्न्ड सिटीजन्स की ही मूवमेंट है. बहुत अच्छी तरीके से ग्रास रूट लेवल पे काम कर रही है. एंड एज यू नो, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आई एम पार्ट ऑफ अ मैनेजिंग कमिटी ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. हम लोगों ने अभी फिलहाल ही रजिस्टर्ड ट्रस्ट हुई है हमारी. तो मैं सभी पब्लिक को भी बता दूं कि प्लीज गो टू दीज वेबसाइट्स एंड रजिस्टर योरसेल्फ एज अ मेंबर. वी आर ओपन फॉर एवरीवन. Thanks a lot, sir, for giving your time and patiently taking my questions and answering them as well. Would like to have you again as a panelist, definitely. Thanks a lot, sir. मैं सभी दर्शकों को भी धन्यवाद देती हूँ कि आपने आज हमारा सेशन 11 बजे देखा. So see you all next Friday with a new doctor and with a new topic. Have a good day. Thanks. भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है. इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं. एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है.